Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners will be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 23717118 and 23421533. Let me repeat the numbers. The numbers are 23717118 and 23421533. For listeners calling from outside Delhi, you will have to prefix the Delhi code 011. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर है हमारे 23717118 और 23421533। हम अपने श्रोताओं को यह बताना चाहेंगे कि आज टेलीफोन नंबरों में बदलाव किया गया है। 23717118 और 23421533। इन नंबरों पर आप फोन करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के एडिटर हरवीर सिंह। हरवीर जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Vishal. Prime Minister Narendra Modi releases 12th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi through direct benefit transfer. Key domestic share markets gain more than 0.5%. Sensex closes above 58,400 level. Nifty settles above 17,300 points. And Brent crude prices were trading around $91 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की तेजी। सेंसेक्स 58,400 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। निफ्टी 17,300 से ऊपर पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें $91 प्रति बैरल के आसपास रहीं। Prime Minister Narendra Modi today released the 12th installment amount of 16,000 crore rupees to farmers under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi through direct benefit transfer. Inaugurating the PM Kisan Samman Sammelan 2022 in New Delhi today, Mr. Modi said PM Kisan is a transformational initiative for the farmers. He said today's event has brought together farmers, agri-startups and stakeholders on a single platform. The Prime Minister said agri-startups in the country are working to help farmers increase harvest, improve soil health and are creating easy-to-use technology to improve agriculture outcomes. Mr. Modi said the need of the hour is to adopt technology-based modern farming techniques. Startups and innovative youth are the future of Indian agriculture and the rural economy of India. He said over 22 crore soil health cards have been given so that farmers have ready information about their land and harvest. Mr. Modi said during the last 7 to 8 years, about 1,700 new varieties of seeds that are suited to the changed climate conditions have been made available to the farmers. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज यूरिया और तरल नैनो यूरिया के उत्पादन मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। नैनो यूरिया कृषि के लिए कम लागत वाला उर्वरक होगा। उन्होंने कहा कि आज से यूरिया को भारत ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया।
इसके अतिरिक्त देश भर में उर्वरकों की खुदरा बिक्री करने वाली दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। इस योजना के तहत 3,30,000 खुदरा बिक्री केंद्रों को प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। ये केंद्र किसानों की कई जरूरतों को पूरा करेंगे। इनमें कृषि से जुड़ी जानकारी, मिट्टी, बीज और उर्वरकों की जांच की सुविधा शामिल होगी। श्री मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। And before we go any further, let me repeat the numbers on which our listeners can call us today. As Vishal just told you, the numbers have changed. So the numbers that you can call us on today are 2371 7118 and 23421533. जी, टेलीफोन नंबर आप एक बार फिर से सुन लें, 23717118 और दूसरा नंबर है 23421533। आप इन नंबरों पर फोन करके प्रोग्राम में अपने सवाल पूछ सकते हैं। Dr. Singh, I beg your pardon, Mr. Singh, the Prime Minister today, of course, there was this important event today which happened, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, under which, he transferred the money directly to the farmers. And also he spoke about a lot of important issues that are relevant to agriculture of the country, be it the agri-startups or be it, soil health. How important are agri-startups and what is the, how important are agri-startups for a country, rural, agro-based country like India, farming-based country like India? I think agriculture is going in a very different kind of way now. It's transforming. And agri-startup is a big phenomenon in agriculture. Startups are coming with the new technologies, new services, as well as new platforms for marketing also. So, and investment is also coming for agri-startups in a big way. More than 1,000 startups are there. And they're going to the farmers, reaching to them to solve their issues, to provide them input material and technological know-how and services about the crop productivity, production at different stages of the crop, to identify whether is there any problem, pest or disease, how to resolve this issue, or how they can find out good fertilizer, good seed, or whenever there is a need of pesticide. So, and what kind of operation they need to get good productivity or production of the crop. जी, हरवीर जी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि यूरिया और तरल नैनो यूरिया के उत्पादन मामले में देश हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है और नैनो यूरिया कृषि के लिए कम लागत वाला उर्वरक होगा। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि नैनो यूरिया है क्या और ये किस तरीके से किसानों को फायदा पहुंचाने वाला है। देखिए, नैनो यूरिया जो है वो एक जो सहकारी संस्था है इफको, उसने उसका उत्पादन शुरू किया है और इसके लिए उन्होंने पेटेंट भी लिया है। ये एक छोटी सी बोतल जो है वो एक पूरा जो बैग होता है 45 kg का यूरिया का, उसके बराबर जो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। लिक्विड फर्टिलाइजर है और इसको आप स्प्रे करते हैं। अभी तो ड्रोन का काफी चलन बढ़ा है, तो ड्रोन के जरिए भी उसका स्प्रे हो रहा है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये एक तो किफायती तो है, साथ में उसका हैंडलिंग भी आसान है। आपको इतना वजन लेकर के चलना, उसकी जगह आप एक छोटा 500 ml का बोतल या 450 ml का बोतल लेके जाएं, उससे उसका काम चल जाए। तो हैंडलिंग आसान है और कॉस्ट लगभग बराबर है। तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरे, ये गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है क्योंकि ये सब्सिडी भी बचाएगा। तो अभी इसका प्रोडक्शन के लिए कई सारा यूनिट्स आ गया। प्राइम मिनिस्टर ने इनका एक गुजरात में डेडिकेट किया था प्लांट प्रोडक्शन का, और अभी काफी तादाद में उसका बिक्री हो रही है। तो ये मानना है सरकार का कि इसका अगर चलन बढ़ेगा और उसके चलते एक तो एफिशिएंसी होगी, जो अप्लाई हम करते हैं नाइट्रोजन का, उसकी एफिशिएंसी लेवल इसमें हाई है कंपैरेटिव टू जो ग्रेन्यूल यूरिया हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके मुकाबले, और बचत भी होगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जी। और अभी इससे पहले कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप की बात हो रही थी। आपने कहा कि 1000 से ज्यादा स्टार्टअप कृषि क्षेत्र में शुरू हुए हैं।
कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप हैं उनके सामने अभी आप क्या चुनौतियां देखते हैं, और जो फंड्स की जो एक अवेलेबिलिटी की बात होती है, फंडिंग कौन करेगा स्टार्टअप में? क्या कारपोरेट वर्ल्ड इस दुनिया में इसमें इस कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए आगे आ रहा फंडिंग के लिए? हाँ, देखिए कुछ ऐसे फंड्स हैं जो ऑलरेडी बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स को फंड कर रहे हैं और उन्होंने $1 मिलियन में काफी सारा फंडिंग अलग अलग स्टार्टअप्स को किए। वो डिपेंड करता है कि किस स्टार्टअप का क्या पोटेंशियल उनको नजर आता है और उसमें टियर 1 टियर 2 तक की कैपिटल की फंडिंग वो कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर फंडिंग हो रही है। इसमें जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, जो कुछ एकदम इनोवेटिव जो हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस लेकर के जो आ रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए जैसे कुछ ने तो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं, वो वहां पर फार्मर्स को इनपुट प्रोवाइड कराते हैं प्लस फार्मर के प्रोड्यूस को मार्केट प्रोवाइड करते हैं। तो दो चीजें वहां पर है। कुछ स्टार्टअप्स फाइनेंसिंग भी अवेलेबल कराते हैं फार्मर्स को, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कि जब तक वो क्रॉप बेच के पैसा कमाएंगे तब तक उनको जरूरत है तो वहां से फंडिंग हो सकती है। कई सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी में लेकर के आ रहे हैं। कुछ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी क्वालिटी को असेस करने के लिए हैं, प्लस कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि जो क्रॉप साइकिल होता है उसके डिफरेंट स्टेजेस पर फार्मर्स को एडवाइस करते हैं कि कब उनको प्लांटिंग करना है, कब बीमारी से बचाव की जरूरत है, या कोई अगर कोई पेस्ट डिजीज अटैक हो गया उसको कैसे रिजोल्व करना है। और ये सारा एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है। सेंसर्स हैं, आपका एआई है, उसके जरिए कि आपने पिक्चर लिया और पिक्चर लेकर के आपने उस प्लेटफॉर्म पे ऐप के ऊपर शेयर कर दिया और वहां जो एक्सपर्ट बैठा है वो उसको एनालाइज और असेस करते हैं उस पिक्चर के माध्यम से ही कि प्रॉब्लम क्या है। प्लस आपका जो फील्ड्स हैं उसमें डिफरेंट सेंसर्स लगाए हैं तो उससे वो लोग हासिल करते हैं। तो एक तरीके से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंटरवेंशन इंडियन एग्रीकल्चर में हो रहा है और उसमें ये स्टार्टअप्स बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जी, और अब रुक करते हैं शेयर बाजार का। शेयर बाजार के बारे में आपको जानकारी दें उससे पहले हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आज कार्यक्रम के नंबर, टेलीफोन नंबर बदले गए हैं और बदले हुए नंबर हम आपको बता रहे हैं 011-2371-7118 और 23421533। इन नंबरों पर आप हमें फोन कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। Let me repeat the numbers again. The numbers are 011-2371-7118 and 23421533। जी, बात अब शेयर बाजार की करते हैं। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% से अधिक का उछाल आया। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। सेंसेक्स 58,400 से ऊपर और निफ्टी 17,300 के ऊपर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.85% यानी 491 अंक की बढ़त के साथ 58,411 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.73% की वृद्धि से 126 अंक बढ़कर 17,312 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.26% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.09% की बढ़त में रहे। The Sensex and the Nifty today gained more than 0.5%. Both indices rose amid positive cues from majority of global share markets. The Sensex closed above 58,400 points, while the Nifty settled above the 17,300 level. The Sensex climbed 491 points or 0.85% to finish at 58,411. The Nifty surged 126 points or 0.73% to end at 17,312. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.26% and the small-cap index climbed 0.09%. In the Sensex pack, 24 companies posted gains while 6 logged losses. SBI surged 3.2% and NTPC climbed 1.9%. Bajaj, Finserv and ICICI Bank both gained 1.8% each. On the other hand, Larsen & Toubro lost the most as it declined 1.5%, followed by HCL Tech, which fell 0.8%. Wipro and Tata Steel both slipped 0.6% each. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors logged gains while 7 logged losses. Power and utilities, both sectors gained 1.9% each.
Bankex sector surged 1.6% and energy index added 0.7%. On the other side, metal sector lost 0.8% and realty index declined 0.5%. Telecom and capital goods, both indices fell 0.2% each. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,520 companies gained while 2,009 fell. Shares of 172 companies remained unchanged. Mr. Singh, in the morning we saw that the markets were sluggish, opened in the red, and then as the day progressed, the markets, gained, and ultimately the markets closed with the Sensex closed with almost a little less than 500 points gain. What are the major factors which contributed to this rise? I think to some extent our market is not basically getting direct connected with the global movement today particularly. And more if we see the stocks where prices have gone up. So we have seen that companies' result, this is the result season, where results are coming good, those stocks are performing better. At the same time, despite this outflow of FIs and even the fall in different markets, different part of the world, our market is performing better and it's basically stable, even rebounding if we see. So reason is that it looks like that domestic investors have very strong confidence in the market. So, and that is adding this kind of rally, or maybe some of the investors are seeing that it is a level to invest or to go for buying the stocks. Although one thing is very clear that from the peak, many stocks are still very below from their 52-week high, and it depends sector to sector and company to company. That's why in this kind of market, individual stocks becomes more important for the investors to invest and to keep an eye on that, where they want to invest. And this is the kind of market we are seeing today. जी, चर्चा जारी रखेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra, and today we are going to be taking calls from you, our listeners. Let me repeat the numbers on which you can make the call and ask any questions. The numbers are 2371-7118 and 2342-1533. Mr. Singh, you mentioned, of course, the fact that domestic, the markets, the strength of the Indian markets is inherent, because that is why, we are kind of at, on days we see that the Indian markets, stock markets are bucking the international trend. Is it also, but the fact of the matter is that we cannot be completely isolated. So in given this kind of a scenario where the markets are reacting to day-to-day, events happening around the world and the markets around the world and the economies, what would be your advice to the individual investor, to stay invested and look for long-term gains, or, to take each day as it comes? So you see, the major markets have already corrected from 25 to 35% from their peak this last few months. So I think correction has already come, but at the same time, the kind of economic developments we are seeing in different economies of the world, because to control the inflation, US Fed is continuously increasing the interest rate, and with the latest number of inflation more than 8%, I think it was 8.25% in the US. So we are seeing, any expert is seeing that one more hike, because they're not taking any chance. US Fed wants to control the inflation at any cost. So in that scenario, capital flow is going from emerging market to the developed countries, where investment is more secure and they are getting good interest rate there. That will affect any emerging market, because definitely now in a global
economy, we are well connected. There is nobody cannot be isolated. Our country is we are a big economy, and we have different kind of linkages with the global economy. So we cannot get ourselves isolated. So whatever will be the impact, as this dollar index has strengthened, and some experts are seeing that maybe it may further get strengthened few percentage level. So that will affect like that. But at the same time, as we have already mentioned, our number for the economy are much better, and we are not in such kind of situation like some advanced economies are. You mentioned, of course, inflation, and we saw that the inflation for September, the figures which came out, it's 7.4%, which is higher than what it was in August. And one of the main reasons for that was because of the higher food inflation. Given the fact that now that Kharif crop is, we're getting new crop in the market, and, as the days progress, we'll be getting more of the crop. Do you think that in the weeks ahead, we can see a bit of softening of the food inflation because of the new crop coming into the market? And that would, reflect on these overall figures, CPI figures? Yeah, definitely we can see some favorable number in the coming days on the inflationary front, because on global side, the food prices are coming down. Edible oil prices corrected a lot, and because we import a lot of edible oil, and if you see the prices has gone down in our import bill also, our imported prices also very down. At the same time, other indexes are also coming down. FAO food index is almost crashed. So if we see that, I think recent past few months we have seen this surge in the prices, particularly for vegetable prices and fruit prices were up. In case of food grain, we are comfortable situation, and now new arrivals are there, and I think this region is also coming with better arrival for fruit and vegetable also. So the prices will soften in the coming. जी, हम अगर बात देखें तो इन्फ्लेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें, मुद्रास्फीति के संदर्भ में, तो हमारे देश के सामने हरवीर जी दो चुनौतियां हैं. एक तो ये है कि आर्थिक वृद्धि के जो अनुमान हैं वो विश्व बैंक ने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कुछ कम किए जरूर हैं, लेकिन ये भी कहा है कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बना रहेगा. लेकिन हमारे सामने जो एक मुद्रास्फीति जो है वो संतोषजनक स्तर से ऊपर है. क्या चुनौती अब मौद्रिक समिति के सामने आप देखते हैं कि किस तरीके से वो इस चुनौती को लेंगे या कैसे पार पाएंगे इस समस्या से? देखिए, रिजर्व बैंक का कमिटमेंट है 4% +-2 के बीच में इन्फ्लेशन को रखना, और उसके टारगेट से ऊपर है, जबकि ये रिसेंट जो लेटेस्ट नंबर है वो ऊपर की तरफ गया है पहले के मुकाबले. तो इसमें एक तो लग रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो स्टांस है उसको जारी रखेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर होता है कि आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करें. तो ये तो वो लेंगे, बट हमें ये भी देखना है कि जो ग्रोथ है एक्चुअली एक दोनों के बीच में संतुलन बनाना है. आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ग्रोथ मोमेंटम भी रखना है. ऐसा ना हो कि आपका जो रिसोर्सेज हैं वो या इन्वेस्टमेंट के जो रिक्वायरमेंट है वो इतना महंगा हो जाए कि उसका इम्पैक्ट वहाँ जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, जो एडिशनल कैपेसिटी ऐड होनी है, उसके ऊपर आ जाए. तो ये उनको देखना पड़ेगा. बट अभी लग रहा है कि शायद एक बार फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा. बट हाँ, एक चैलेंज और है कि सप्लाई साइड में काम है पॉलिसी का जी. ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम है आरबीआई का, लेकिन सप्लाई का काम है गवर्नमेंट का. जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनको देखना है कि जो कमोडिटीज हैं जिनका प्राइस राइज हुआ है उनको कैसे कंट्रोल करें, कैसे बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट करें. दोनों का जो मिलकर के जो एक संतुलन बनना होता है दोनों से बनता है. तो नाउ आई थिंक नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो टुवर्ड द डिफरेंट कंसर्न मिनिस्ट्रीज. जी. और शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक सेक्टर में सबसे ज्यादा तेजी रही है, 3.47% की. पीएसयू बैंक सेक्टर का आप आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में किस तरह का प्रदर्शन देखते हैं, और हमारे निवेशकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? एक चीज आप देखिए कि हमें ये दो चीजें देखनी है कि क्रेडिट ग्रोथ कैसा है जी. और इंटरेस्ट रेट है, और जो बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अच्छा है. अभी जो रिजल्ट्स आए हैं बैंक्स के, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है. तो अगर उनके प्रॉफिट्स के नंबर बहुत बढ़िया हैं तो वो स्टॉक्स किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा.
So it is good कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि प्राइवेट बैंक्स का जो एक्टिविटी होती है स्टॉक्स में ज्यादा होती है, पब्लिक सेक्टर की कम होती है। तो ये जो इन्वेस्टर है वो भी इवेल्युएट करते हैं कि इस वक्त जहां पर उसको बेहतर गेन के चांसेस ज्यादा हैं, सो दे गोट बेसिकली उस तरफ जाते हैं। तो ये शायद उनको पीएसयू बैंक्स में अभी बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही है। और रुपए के प्रदर्शन पर अब नजर डाल लेते हैं। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज मामूली 1 पैसा मजबूत होकर 82 रुपए 36 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला कारोबार रहा। मंदी की आशंकाओं और दुनिया भर में सख्त मौद्रिक नीति जारी रहने के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% की बढ़त में रहे। वहीं दूसरी तरफ जापान का निकेई 1.2% घाटे में रहा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% के नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान लंदन का FTSE 100 0.8% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 0.9% और जर्मनी का डैक्स 1.1% की बढ़त में चल रहे थे। Moving on to commodities, oil prices today fell as China's continuation of loose monetary policy was offset by fears that high inflation and energy costs could drag the global economy into recession. In intraday trade, Brent crude was trading at $91 per barrel, while WTI crude prices were at $84.75 per barrel. सोने की बात करें तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध वाला सोना का वायदा मूल्य आज 300 रुपए बढ़कर 50,560 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 820 रुपए की तेजी से 56,045 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार में सोना बढ़त के साथ $1,663.80 प्रति औंस और चांदी $18.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। Mr. Singh, I want to ask you here today because of course we are seeing that the gold prices today rose, but overall if we see a trend in the last 6 months, the gold prices, if you see it in US dollars, it has fallen. Why do you think that has happened? Is it because the precious metal is losing its sheen vis-a-vis the strengthening dollar? Maybe. If you see that today, I think dollar index remain almost stable, and we have seen some shining in gold. But because if you see the comparison between the two and where investor can go, where is a better gain, and you have already mentioned that in last 6 months gold prices have come down in dollar terms. It means that investor has not made money out of that. In fact, they have lost money out of that. So in any option of investment, investor will always go where he has some gain in future. And coming to oil prices again, we are seeing this seesaw, which is so far as India is concerned, of course, our prices are stable for the last few months, and that's a good thing for the common man. But given the fact that international oil prices, ever since the OPEC has decided to cut down on the production, do you think we can expect more volatility in the oil prices in the coming weeks and months ahead? Actually, if you see that important aspect here is that OPEC Plus decided not to increase the production. So they want to keep the prices at a better level. In fact, despite the pressure from US, Saudi has not increased the production. So it is being seen even at geopolitical level is a very important move. So there was some kind of thinking that because there are sanctions against Russia, so that more and more oil may be pumped out by other producers, but it is not happening. हरवीर सिंह जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Prime Minister Narendra Modi releases 12th installment of Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi through direct benefit transfer. Key domestic share markets gain more than 0.5%. Sensex closes above 58,400 level. Nifty settles above 17,300 points, and Brent crude price was trading around $91 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters, and later in the evening at 6:30 p.m. with another edition of Market Mantra. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Market Mantra.